Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. At least 2 buildings were directly hit by rockets launched from Lebanon on October 27, wounding at least 5. In Tamra, a rocket made a direct hit on a house, severely wounding 1 person and moderately wounding 2 others. In an ongoing search operation in Jammu and Kashmir's Akhnur, the Indian Army's White Night Corps reported on Monday that a body of a terrorist along with a weapon has been recovered. Independent Lok Sabha MP from Baramulla in Jammu and Kashmir, Engineer Rashid, surrendered at Tihar jail on Monday after his interim bail in a terror funding case currently being investigated by the NIA expired. The Enforcement Directorate on Monday conducted searches at more than half a dozen locations in Bangalore, Bengaluru, Mandya and Mysuru in Karnataka's MUDA-linked money laundering case, sources said. Now the news in detail. At least 2 buildings were directly hit by rockets launched from Lebanon on October 27, wounding at least 5. In Tamra, a rocket made a direct hit on a house, severely wounding 1 person and moderately wounding 2 others. Israeli ambulance services evacuated the wounded to the hospital for further treatment. Charred vehicles and damage were left at the site, with local residents assessing the destruction. In an industrial area near Acre, a UAV hit a factory, wounding 2 employees who were evacuated. The Israeli army reported at least 90 projectiles identified crossing from Lebanon into Israeli territory. Heavy fighting in Lebanon between Israeli forces and Hezbollah intensified recently, with an Israeli airstrike in Sidon killing 8 people. The ongoing conflict has led to significant casualties and damage in both Israeli and Lebanese territories. In an ongoing search operation in Jammu and Kashmir's Akhnur, the Indian Army's White Night Corps reported on Monday that the body of a terrorist along with a weapon has been recovered. The incident began when terrorists attempted an attack on an army convoy in the Sundarbani sector near Asan earlier in the day. The White Night Corps, responsible for security in the region, confirmed that terrorists targeted an army vehicle, but quick retaliation from Indian troops thwarted the attack without any injuries or damage. The initial assault took place in the Badal area of Akhnur, where gunfire was directed at an army vehicle, including an ambulance. Villagers near the Asan temple in the Badal area of Kaur alerted authorities after spotting 3 heavily armed suspects suspected to have infiltrated from across the Pakistan border. Army and J&K police forces promptly cordoned off the area and launched an intensive search operation. Currently, the area remains secured as army troops, supported by local police, continue their efforts to locate the suspected militants. The much delayed national census is likely to begin next year. According to news reports, the census exercise is expected to last till 2026, following which the government is likely to carry out delimitation of Lok Sabha seats. The census exercise has been done every 10 years since 1951 in India. The census was to take place in 2021 as a once-in-a-decade exercise, but it was delayed due to the COVID pandemic. The government on October 21 extended the tenure of Registrar General and Census Commissioner of India. According to another source, the work for the census and the NPR will begin early next year and the population data will be announced by 2026. With this, the census cycle is likely to be changed. According to 2011 data, India's total population was 121 crore, sex ratio was 940 females per 1,000 males, literacy rate was 74.04% and the population growth was 17.64% from 2001 to 2011. Independent Lok Sabha MP from Baramulla in Jammu and Kashmir, Engineer Rashid, surrendered at Tihar jail on Monday after his interim bail in a terror funding case currently being investigated by the NIA expired.
The Patiala House Court in New Delhi has deferred the pronouncement of order on regular bail for him till November 19 this year. On October 14, the court extended his interim bail on the health grounds of his ailing father and directed him to surrender to Tihar on October 28. The engineer initially got interim bail for campaigning in the recently held Jammu and Kashmir Assembly elections. Polls for the 90-member Jammu and Kashmir Assembly were conducted in 3 phases from September 18 to October 1, with results announced on October 8, revealing a decisive victory for the National Congress Alliance, which secured 48 seats. In 2005, Engineer Rashid was arrested by the Special Operations Group in Srinagar for allegedly supporting militants and was held for 3 months and 17 days. He faced charges of anti-national activities and was incarcerated in Kargo, Hamhama and Rajbagh prisons. However, the Chief Judicial Magistrate of Srinagar later dropped all charges against him on humanitarian grounds. In August 2019, Rashid was again arrested under the Unlawful Activities Prevention Act, and during his incarceration, he filed his nomination for the 2024 parliamentary elections from jail and won by a margin of 204,000 votes, defeating former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah. A debate titled "Role of Police" was organized at the auditorium of Government Degree College, Uttarsu, on Monday in memory of police martyrs under the Civic Action Program. The program was organized by Anantnag Police in collaboration with GDC Uttarsu. Participants included students and members of civil society. During the program, the speakers highlighted the role of police and the roles of police with the society. STPO of Achabal, Dr. Rakib Hussain, was the chief guest at the event. इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। तो हमारी सेमिनार और डिबेट कमेटी ने बच्चों को तैयार किया, तो बच्चों ने तमाम पहलू जो भी है समाज के उजागर किए, जिसमें पुलिस का रोल जो है हम बर्थ डेथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो सारा बच्चों ने सामने लाया। कुछ उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा रखे, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी उन्होंने सामने लाए। जो हम चाहते हैं कि रिलेशन जो है वो सोसाइटी में पुलिस का और लोगों का आपस में ज़्यादा बढ़े तो बहुत अच्छा है। यस दैट कपल ऑफ ईयर्स पुलिस और पब्लिक का रोल जो है वो आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो कि पब्लिक दरबार से लगते हैं, उसमें से बड़ी टू द पॉइंट्स जो है सॉल्यूशन होता है। तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादा पुलिस पे है। तो जो ड्रग बढ़ रहा है इसमें भी पुलिस कर रही है, अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरऑल वी आर द रिस्पांसिबल, सोसाइटी इज़ द रिस्पांसिबल। सोसाइटी को भी चाहिए कि अपने जो है वो अपने आप को प्योर रखे, जो भी खामियां हैं वो पुलिस के सामने लाए और खुद भी तैयार। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज क्रीम ऑफ द सोसाइटी, ये हमारी क्रीम है सोसाइटी की, तो इनकी मैसेज जो है वो ज़्यादा वर्क करेगी। अगर यूथ को इन्वॉल्व किया गया डिबेट्स में, सेमिनार्स में, तो ये ज़्यादा खुशकिस्मती है, क्योंकि यूथ ही जो है वो कल का फ्यूचर है। दे आर वेरी मच पिटेंट, बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रखे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज जो है सोसाइटी पे भी जाएगी और अच्छा। We'll take a short break, so stay tuned. It only takes one prick of a needle to save lives. Get tested for HIV.
Welcome back. The long pending demand of Dehruna villagers in Jammu and Kashmir's Anantnag district has finally been fulfilled as the Road and Bridges Department macadamized the inner link road, bringing great relief to people living in the village. The villagers have thanked the department for taking up the project at the right time and bringing back good road connectivity to the village. जहाँ तक मैग्डमाइजेशन हो रही है तो वो प्रॉपरली हो रही है. वी हैव 2 टायर 3 टायर जो क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग है 3 टायर है. एक तो हमने जहाँ प्लांट में है वहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं और एक और इंस्पेक्शन इसका हो जाएगा आफ्टर लेइंग अप मैग्डम. ऐसी कोई बात नहीं है कि मैग्डमाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हुई तो, लेकिन हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है प्रोजेक्ट कास्ट के लेकर. जितने मीटर्स हमें अलाउड है, जितना लेंथ हमें अलाउड है तो हम उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि डीपीआर कास्ट जितना है. तो कुछ लोगों की डिमांड है कि हमारे पोर्शन में भी डाला जाए मैग्डम, लेकिन ऐसा है उसमें अभी WBM नहीं हुआ है तो वी विल टेक इट नेक्स्ट ईयर. हम उसको टेकअप करेंगे डेफिनेटली. इसका लोग है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमें. हाँ, लोगों की डिमांड है कि हमारे घर तक हो जाए मैग्डम तो इंशाल्लाह अगले साल हम इसको प्लान में रख रहे हैं क्योंकि इसमें रोड में कुछ लेयर्स डालनी होती है. WBM उसमें हुआ नहीं है, उसमें खाली ये ब्लॉक रोड बनी है तो उसमें WBM नहीं हुई है, खाली GSB डाली गई है. तो वी विल ले प्रॉपर लेइंग के तार उसको अगले साल हम ले लेंगे. हमने अभी हम DPR बना रहे हैं, आगे 1.5 किलोमीटर और बन रहा है. गाँव वालों ने बड़ा कॉपरेशन दिया. इन्होंने कहा कि जो यहाँ डिपार्टमेंट आया है काम को देखकर उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की. कहा कि बिल्कुल इन्होंने वो काम किया है जो अकॉर्डिंग टू ये क्या कहते हैं इसको अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट किया है इन्होंने काम. बहुत शुक्र है अल्लाह का कि गाँव वालों ने जो साथ दिया है तभी जाकर RNB वालों ने भी अच्छे से काम अंजाम दिया है. हम ताही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस डिपार्टमेंट का और सारे डिपार्टमेंटों का. सबों को चाहिए कि इसी तरह देखें, सीखें इनसे कि इन्होंने कैसे काम किया. हर जगह ऐसा काम होना चाहिए. बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाह. आपने खुद इस काम का जायजा लिया जो यहाँ पे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, खासकर डिवीजन डूरू, जहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर साहब आते हैं, JE साहब आते हैं. 2-3 दिन से लगातार वो इस काम का मायना कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आज 50 साल के बाद ये हमारी दीदीना मांग पूरी हो गई है. इस चीज़ को देखते हुए हम आज पूरे डिवीजन का जो डूरू में है, चाहे वो सब डिवीजन है, चाहे वो बड़ा डिवीजन जहाँ पे D साहब बैठते हैं, बोदा साहब बैठते हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी जानतदार काम हमने आज तक नहीं देखी है. और हम आगे भी उम्मीद करते हैं जहाँ जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पे डिपार्टमेंट तवज्जो करे. तो इसके लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं. जितने भी मुलाजिमीन हैं ये रात के 9 बजे निकलते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, लेकिन काम बहुत ही खुश असलूबी से इन्होंने अंजाम दिया है. इसके लिए हम पूरे गाँवों की तरफ से A massive fire broke out in Kanchanpur town of Tripura after a gas cylinder blast led to the destruction of a candle factory, a BO office and 3 houses, causing damage to several lakhs worth of properties. According to police sources, the incident occurred on Sunday night around 10:55 p.m. in an area near the auto stand in Kanchanpur town. The fire originated in a house where an LPG cylinder explosion ignited the flames. The fire spread rapidly, engulfing a nearby candle factory that was entirely destroyed within moments. Shortly after, another gas cylinder blast occurred, spreading the fire to 3 adjacent buildings. Upon receiving news of the fire, personnel from the Kanchanpur Fire Department, along with a large contingent of police officers and TSR forces, including Kanchanpur Sub-Division Police Officer and OC Udyam Debarma from Kanchanpur Police Station, rushed to the scene with 2 fire engines. Additional assistance was called in from the Panisagar Fire Department. However, before their arrival, the Kanchanpur Fire Department team, with the help of local youths, managed to bring the fire under control by around 12:30 a.m., saving nearby buildings and the larger Kanchanpur market from further damage. Unfortunately, one house, the candle factory and the BO office were completely destroyed, leaving 3 buildings uninhabitable. And speaking to the media,
The sub-divisional police officer assured that accommodation are being arranged for those who lost their homes or suffered significant damage. He also confirmed that there were no reports of injuries or casualties in the incident. सर ये जो आग लगा सर कहाँ से लगा और कैसे लगा सर? ये हम लोगों को 10:55 PM के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पे एक जो टिन का घर है वहाँ पे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। आसपास के लोगों ने वो ब्लास्ट की आवाज़ भी सुनी और उसके पीछे कैंडल की एक फैक्ट्री हुई थी। वो सिलेंडर ब्लास्ट से आग कैचअप किया और फिर वो स्प्रेड हो गई। रिसेंटली जैसी खबर मिला हम लोग को 10:55 PM पे रिसेंटली पुलिस की फायर सर्विसेज TSR तीनों ने रेस्क्यू किया और इमीडिएटली और बहुत सारे विलेजर्स जो यहाँ के वो भी आए। सबकी हेल्प से हमने अभी साथ में काम करा लिया। अभी सिचुएशन फिलहाल ठीक है। प्रॉपर्टी का तो लॉस हुआ है बट ह्यूमन का कोई लॉस नहीं हुआ। सब लोगों को हमने सेफली टाइम पे वहाँ से रिलीव कर लिया था, निकाल लिया था। तो ह्यूमन का कोई लॉस नहीं। प्रॉपर्टी का नुकसान है वो हम एसेस करेंगे और जो लोग अभी हताहत हुए हैं जिन लोगों का घर था उनके भी रहने का ऐसे एग्जामों से अथॉरिटी के साथ प्लान कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। We'll take another short break, so stay tuned. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। The ABC for HIV prevention. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back. The government of Tripura is considering hike of dearness allowance and discussions are underway to make sure that the benefits could be extended to state government employees and pensioners as soon as possible. Chief Minister Dr. Manik Saha, speaking at the sidelines of a party membership drive, has said the government is considering the matter and discussions on the issue are underway. On being asked when the announcement might come, he said, under quote, the specific time can't be disclosed right now, unquote. প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা বিজেপিতে যোগদান করেছে গতকালকে মেয়রের হাত ধরে প্রায় ৬-৭ জন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক যোগদান করেছে কি বলবেন? দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টিটা দ্বিতীয় পর্যায়ে সদস্যতা অভিযান চলছে এবং টাইমও বাড়িয়েছে 15 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে সাধারণ সদস্যতা অভিযান। তো সেই হিসাবে আমরা সব জায়গায় দেখছি মানুষ ইচ্ছে প্রকাশ করছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার জন্য। তো আমাদের সমস্ত নেতা নেত্রীগণ সমস্ত জায়গায় যাচ্ছেন, আমাদের কার্যকর্তারা সব জায়গায় যাচ্ছেন, মানুষ আসছে। আমিও ভাবলাম যে সময়ের ফাঁকে আমার যে কেন্দ্র আছে সেখানে আমাদের ওয়ার্ড ভিত্তিক যারা যুবকরা বিশেষ করে যারা আছে যুবক যুবতীরা তাদেরকে বলেছি যে আমি আসবো এবং আমি দেখলাম বিভিন্ন ওয়ার্ড ভিত্তিক আমি বলেছি আজকে 2-4টে ওয়ার্ডে আমি যাব। দেখছি
দেখছি মানুষ আসছে এবং জয়েন করছে। আমার সাথে আমাদের মেয়র সাহেব আছেন, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমাদের আছেন, মন্ডল প্রেসিডেন্টও আছেন, যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট, সব মিলে মানে কর্পোরেটরও আছে। তো দেখছি মানুষের মধ্যে যাদেরকে আগে অ্যাপ্রোচ করতাম, আমি কয়েকবার আমার কেন্দ্রেতে আমি দেখেছি যাদের অ্যাপ্রোচ করেছি তারা কিন্তু তখন একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু আজকে দেখছি শতপ্রণোদিত হয়ে ওরা আসছে। তো এই বিষয়টা ওরা বুঝতে পারছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে যাকে বলে সাবস্টিটিউট আর কেউ নেই। এর জন্য মানুষ দেশকে যদি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তো ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আস্থা রাখতে হবে এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখে বিশেষ করে মানুষ আসছে। আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা পার্টি যেখানে মানুষের কথা চিন্তা করে, দেশের চিন্তা করে। তো এইরকম একটা পার্টি তো আর কোথাও পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক চেতনা যুক্ত একটা পার্টি। তো সব মিলিয়ে মানুষ বুঝতে পারছে যে এই পার্টি একমাত্র মানুষের যে সমস্যা নিরসনে তারা থাকবে এবং সেই কারণেই মানুষ আসছে। Maharashtra Deputy Chief Minister and NCB Chief Ajit Pawar filed his nomination from the Baramati Assembly seat today. Notably, his nephew and grandson of Sharad Pawar, Yugendra Pawar, is contesting from the same constituency as the NCB SP candidate. Baramati will see another Pawar versus Pawar contest after Supriya Sule, daughter of Sharad Pawar, defeated Sunetra Pawar, wife of Ajit Pawar, during the Lok Sabha polls earlier this year. Ajit Pawar split the NCB in June 2023. When asked about contesting the election against his uncle, who has won this seat 7 times, Yugendra Pawar said that he feels it is quite sad and quite unfortunate. Yugendra Pawar feels that a fight against his own uncle won't be tough, but won't be easy either. सुरुवातीला सगळ्यांना दिवाळीचे खूप खूप शुभेच्छा। आज आपण फॉर्म भरायला जाणार आहे आणि खूप आनंद वाटतोय की अशा एक चांगल्या दिवशी आपण तिथं फॉर्म भरायला जातोय। सगळ्यात जास्त आनंद म्हणजे स्वतः पवार साहेब आणि माझे आई वडील ताई आणि इथले सगळे ज्येष्ठ कार्यकर्ते पदाधिकारी असं आम्ही तिथं जाऊन फॉर्म भरणार आहे। Meanwhile, Ajit Pawar said everyone has the right to contest. Whenever any candidate is fielded against him, he tags them as a strong candidate and campaign accordingly. The Maharashtra Assembly elections are scheduled for November 20, with counting for all 288 constituencies set for November 23. का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। The Enforcement Directorate on Monday conducted searches at more than half a dozen locations in Mangalore, Bengaluru, Mandya and Mysuru in Karnataka's MUDA-linked money laundering case, sources said. The searches are underway at the premises of a builder, among other private individuals. The move comes within a week of the agency summoning 6 employees associated with the Mysuru Urban Development Authority in Karnataka for questioning. The employees were summoned in connection with a high-profile alleged scam on different dates for the interrogation, which will take place at the ED's zonal office in Bengaluru. Those summoned have also been instructed to bring several documents related to the case. Investigators from the ED are focused on uncovering evidence and documents linked to Chief Minister Sitaramaya and several officials associated with him. Reacting to ED raids in Bengaluru and Mysuru, Karnataka Minister H.K. Patel said, "Let them know that in the last 5 years, only in 6 cases, the ED has pursued for prosecution." Searching, premises in Mysuru and in Bangalore as well. Let them do that, but let them also know that in last 5 years, only in 6 cases, the ED has pursued for prosecution.
ED has pursued for prosecution. It means neither they are punishing nor they are getting the property back. They are only making this political, what I can say, political confusion to be got created. The CM has gone before the divisional bench. When is it coming for hearing? What are the details? It is coming up before the division bench at the earliest. I don't want to comment anything on that court issue. But one question perhaps. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.